ये पहले पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने उतार देना है। अच्छा नहीं सही है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। After Hamdu Sana, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You know, Alhamdulillah, we have a same topic about prayer, blessings of prayer, namaz ki barakat. In a few minutes we have, and I have few verses and hadith about prayer. First of all, Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala said, wa aqimis salata li dhikri. Establish prayer is the Allah's order. Establish prayer, namaz padho, li dhikri, for my dhikr. This means prayer, ritual prayer is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. The ritual prayer is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Like Quran is zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, namaz is zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and Surah Maryam verses number 59, 60 and up to the 64. Allah subhanahu wa ta'ala said about the previous prophets and messengers. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala said, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala said, then the later generations of those prophets and messengers, later generations, next generations, and followed their pathetic successors who neglected prayers, who gave up prayers. उन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ दी. औलाद अंबिया की थी. They were the next generations of prophets and messengers, but they gave up prayers. They neglected prayers. وَاتَّبَعُوا شَهْوَاتِ. Allahu Akbar. And they followed the lusts, shahwat, of their ill-commanding selves. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. So they will soon face punishment in the hereafter, in the Ghayy valley. Ghayy valley is the one town of hellfire, is the one place of hellfire, because they neglected prayers, they gave up prayers. Because of this, they will enter the hellfire, and the special one town name, the one place name is Ghayy. They will enter the Ghayy in the hellfire because they neglected prayers. They left prayers. नमाज नहीं पढ़ते. अंबिया की औलाद होकर नमाज छोड़ दी. अल्लाह ने फरमाया तुम्हें वहां फेंकूंगा जिसका नाम ग़य्य है, in the hellfire. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. लेकिन आपके लिए मुबारकबाद है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता आज भी तौबा कर ले. तौबा का दरवाजा खुला है. But except the one who repents, जो तौबा कर ले, who repents and believes and persists in the righteous works. Illa man taba wa amana wa amila salihan. First of all, you have to do tawbah. Then iman, faith. Then righteous works, good deeds. ये तरतीब है. पहले तौबा, फिर ईमान, फिर अच्छे काम. पहले से अच्छे काम करें, ईमान नहीं है कोई फायदा नहीं है. जितने अच्छे काम करते जाएं,
गैर मुस्लिम जितनी मर्जी मसाजिद बना लें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईमान नहीं है। फर्स्ट तौबा, देन ईमान, देन गुड डीड्स। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज इन ऑर्डर्स। तौबा, ईमान, एंड देन गुड डीड्स, righteous works, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you the Jannah. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا, they will enter paradise and will not be wronged in the least, जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह पूरे पूरे आमाल, पूरी पूरी जजा अता फरमाएगा। And in the hadith, the beautiful hadith, Prophet ﷺ said, according to Jabir radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. And this hadith from Muslim, Tirmidhi, both hadith of Siyasita. Allah's Messenger ﷺ said, the difference between the servant and unbelief. In the easy way, the difference between Muslim and non-Muslim. The difference between believers and non-believers. What is difference? Only is the omission of ritual prayer. Is only the prayer. मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है? सिर्फ और एक ही फर्क है। क्या है? बोलिए यार, क्या हो गया? नमाज का फर्क है। इस हदीस ऑफ तिरमिज़ी, मुसलमान और गैर मुस्लिम में एक ही फर्क है, वो नमाज मुसलमान पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम नहीं पढ़ते। यही पहचान है। बाकी तो अंदर का मामला है ना, बाकी तो अंदर का भाई जाहिरी अमल तो यही है ना। एक जाहिरी अमल, जो नमाज पढ़ रहा है ही इज बिलीवर, जो छोड़ रहा है बस उसका कुछ पता नहीं वो कौन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। एंड देन according to Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the beautiful hadith of Muslim, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the 5 ritual prayers, 5 namazein, the 5 ritual prayers, the day of congregation, Friday, 5 prayers, and then Friday prayer till the next day of congregation, Friday, and the Ramadan till the next Ramadan, they are atonements for the sins committed during the intermission, so long as one avoids the major sins. बड़े गुनाह ना करो, गुनाह कबीरा ना करो, छोटे गुनाह ये जुमा की फजीलत से ही, जुम्मे की वजह से ही माफ होते रहते हैं। 5 prayers and जुमा prayers and Ramadan, 3 काम करते रहो। 5 prayers, Friday prayer and Ramadan, the fasts of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala will remove all your saghira guna, sagair will remove because of these prayers, 5 prayers, Juma prayer and the fast and Ramadan. लेकिन गुनाह कबीरा तौबा के बगैर माफ नहीं होते। कबायर, if you want to remove, then you have to do tawbah. With tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala will remove the gunai kabira too, the major sins too. And according to Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, this hadith from Muslim and Tirmidhi, Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, Subhanallah, if there is a river at the gate of one of you, from which he bathes himself 5 times every day. A beautiful example. Prophet ﷺ said, if you have a, subhanallah, the big river in front of your home, in front of your gate, the front gate, and anyone from you, he takes bath, he showers every day 5 times, subhanallah, will any trace of dirt remain on his body? Sahaba said, no trace of dirt will remain on his body. Then Prophet ﷺ said, well, that is symbolic of the 5 ritual prayers, by means of which Allah erases the sins of his servant, or our sins,
ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने बंदों के गुनाह इस तरह वो माफ करता रहता है. This is the 5 prayers, this is the fazila, this is the barakah, and this is the blessings of 5 prayers. Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to pray on time 5 prayers. Allah subhanahu wa ta'ala हमें तौफीक दे कि नमाज हम पढ़ते रहें. वमा अलैया इल्लल बलाग.